Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to the class 5th maths. So till now we already discussed about how to find LCM, how to find HCF by different methods, and our today's topic is some facts about HCF and LCM. Okay, there are so many properties, or you can say facts, which is related to the LCM as well as LCM, and out of these three facts, the last one is, that is the third, is very important, that is relationship between the LCM and HCF. Okay, so let us try to understand the first one, that is two numbers are said to be co-prime. Two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. समझो इस चीज को कि अगर दो नंबर को प्राइम होंगे, इफ टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम, दो नंबर्स को आप को प्राइम कह सकते हो अगर उनके बीच का जो HCF है वो क्या है, सिर्फ 1 है. ठीक है. अच्छा, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द को प्राइम. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन गो थ्रू माय वीडियोस एंड यू कैन इजीली गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम. सो लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक 3 and 5. If I will ask ki these numbers are co-prime or not, so what you have to do, you have to find the HCF between 3 and 5. Okay, what you have to do, find the HCF between 3 and 5, and by the shortcut method you can easily find the HCF of 3 and 5. I already told you in my previous video, you can go and watch the video, the shortcut method to find the HCF. So what you have to do, you take the difference between them, that is how many, 2, but 2 can't completely divide both the numbers. Okay, so you will factor it, that is 2 and 1. okay, factor क्या होगा इसका, 2 होगा और 1 होगा. so 1 can completely divide 3 and 5, so 1 will become the HCF of both the numbers. so if HCF of 3 and 5 is 1, then both the numbers are said to be a co-prime numbers. ठीक है. let's take some more example to understand this concept more clearly. like let us take example of 10 and 11, 10 and 17. let's take 10 and 17. if I will ask you both the numbers are co-prime numbers or not, so what you have to do कि you have to find the HCF. अगर वो HCF, इन दोनों नंबर का HCF अगर सिर्फ 1 आ जाता है, so both the number will become the co-prime number. ठीक. now you have to find the HCF. ठीक है. so use shortcut method in this case. okay, or you can easily you can also use by factor method, prime factorization method to find the HCF of both the numbers, but I will use shortcut method, that is take the difference between both the numbers, that is how many numbers, 7. ठीक है. 7 आया दोनों के बीच का difference. now you have to check that this number can completely divide 10 and 17 or not. so 7 can't divide 10 as well as 17. the number which can divide the difference, if the difference will divide both the numbers, then this difference will become the HCF. but if it is not divide, then you have to take the factor of this one. 7 का factor आपको लेना है, that is 7 and 1. now 1 can only completely divide both the numbers, that is 10 and 17, so 1 will become the HCF of both the numbers. if the HCF of both the number is 1, then definitely both the numbers are co-prime numbers. ठीक है. and if you have any confusion regarding the shortcut method of HCF, how to find the HCF by shortcut method, then you can easily go through my video where I already taught you how to find the HCF with the help of shortcut method, and you can easily find the HCF of any two numbers within a second or within a minute. okay, but don't use in your exams. ठीक है. only you have to use this to check your answer, or you can also use this to check that the co-prime numbers, either both the numbers are co-prime or not. आप यहाँ पे use कर सकते हो, but don't use that formula in your exam. ठीक है. now the second property is, that is the LCM of two co-prime number is equal to their product. now यहाँ पे बात हो गई आपकी LCM और HCF के बारे में, राइट, कि अगर दो नंबर को प्राइम तभी होंगे जब उनका HCF 1 होगा. अब को प्राइम को रिलेट किया जा रहा है LCM से. ठीक है. so को-प्राइम जो दो, इफ टू द LCM ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स. ठीक है. LCM जो होगा वो दो को-प्राइम का नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर. इफ आई विल से दैट कि देखो, अगर आप सेम एग्जांपल ले लेते हो, लाइक 10 and 17 का एग्जांपल ले लो. ठीक है, दो नंबर्स हैं. ठीक है. सो व्हाट विल बी द LCM ऑफ टू को-प्राइम नंबर. ये को-प्राइम नंबर है. ठीक है. इनका अगर आप LCM निकालोगे, इफ यू विल फाइंड द LCM, अच्छा डिवीजन मेथड से इसका LCM निकाल लेते हैं. ठीक है, चलो. सो
देयर इज नो नंबर, देखो यहाँ पे देयर इज नो नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड बोथ द नंबर्स, ठीक है, देयर इज नो नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड बोथ द नंबर, और एटलीस्ट आपको क्या चाहिए रहता है, दो ऐसा नंबर चाहिए होता है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे एटलीस्ट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और यही चीज़ तो बताने की कोशिश की जा रही थी, देखो यहीं पे ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर दो को प्राइम नंबर हैं सो उनका एलसीएम क्या होगा ना, उनके प्रोडक्ट के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, सो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लाइक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 and 5 का ले लेते हैं। इतना पता है कि HCF आपका इसका 1 है, सो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। सो आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आप देखो कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है आपको जो कंप्लीटली डिवाइड कर सके, सो यही दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आपका एलसीएम हो जाता है। सो 3 and 5 विल बिकम द एलसीएम ऑफ 3 and 5। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। सो को प्राइम, अगर इफ समवन आस्क यू कि व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, सो यू कैन इजीली से दैट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर विल बिकम द को प्राइम ऑफ द एलसीएम ऑफ दैट नंबर, ठीक। नाउ मूव फर्दर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, okay। So it is very important, that is relationship between LCM and LCM. We will understand this with the help of an example. Like suppose करो आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है A and second one है B, दो नंबर हैं आपके पास, ठीक है। Now होता क्या है, रिलेशन क्या होता है कि LCM of A and B, ठीक, LCM of A and B, LCM of A and B should be equal to the product of both the numbers, that is A into B, and HCF of A and B, ठीक। लेट्स टेक एग्जाम्पल, ठीक, लाइक मैंने 3 and 5 का आपको क्या निकालना है, आपको रिलेशनशिप दिखाना है आपको, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप कि एलसीएम ऑफ A and B, सो सबसे पहले आप निकालोगे एलसीएम ऑफ 3 and 5, but sir 3 and 5 are the co-prime numbers and the LCM of co-prime number is the product of both the numbers, so what will be the LCM of 3 and 5, that is 3 into 5, it is clear to everyone, is equal to, now देखो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सो यू विल राइट 3 into 5, and what is the HCF of A and B, because A and B, that is 3 and 5 are co-prime number, so HCF will always be 1, so देखो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 5s are 15 and 3 5s are 15, देखो दोनों बराबर हो गया ना, so hence prove that this relation is true, hence prove that this relation is true। So always remember the relation, that is if there are two numbers then LCM of both the numbers should be equal to the product of both the number, that is A into B divided by HCF of A and B, okay। So अच्छा, the question will on the basis of this topic there are so many questions can you ask from you, that is the first question will कि if HCF is given like LCM or LCM out of these 3 units, ठीक है, out of there are 3 units, देखो 1 2 and 3, out of these 3 units 2 units will be given and you have to find the third one unit, like अगर आपको HCF LCM दिया रहेगा और HCF दिया रहेगा then you have to find the first number और second number, ठीक है। इसी तरह आपको 3-4 यूनिट्स दी रहेंगी, आपको लास्ट 1 यूनिट निकालनी होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, वी विल डू सम मोर एग्जांपल्स और क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ LCM and LCM in our virtual class. Thank you so much and God bless you.